Assalamualaikum, welcome back to my channel. My name is Haranuman. It's been a very long time since I came uh, on YouTube to record a proper Tamiz video. So I am here all glammed up to give you some hijab tutorials that I have been using for almost a year and a half. I have stopped using crimps. I have stopped using the cotton hijabs. I am 100% on these Georgette hijab, Georgette chiffon hijabs. They are absolutely wonderful for summers or winters. I love how they fall और इनको मुझे बहुत ज़्यादा like set नहीं करना पड़ता. So I'm gonna show you three hijab styles that I normally wear when I go out. So stay tuned. Before I start off with the tutorials, I want to update you guys on my new volumizers. I don't use clips anymore. I use this scrunchie. ये एक कपड़े का scrunchie है. It's like you wear it on your ponytail like this, and the other one is this one. This is the black one. ये दोनों जो है आपकी पोनी को वॉल्यूम देते हैं. सो आई यूज़ दीज ऑन माई बन. समटाइम्स आई डोंट यूज़ देम एट ऑल. अभी मैंने नहीं यूज़ किया हुआ, बट फिर भी आई एम वेयरिंग माई अंडर हिजाब, तो वो थोड़ा बहुत वॉल्यूम जो है इट्स देयर. बट अगर मुझे प्रॉपर करना हो तो आई यूज़ either one of these to give my hijab a proper I'm already wearing is my most worn hijab, especially when it comes to Instagram videos or TikTok. This is a very easy wrap. You can see I am just wearing my under hijab. Uski video posted hai on my channel. I will link it over here. Uske alawa it's the same thing जो मैं पहले रैप करती थी उसी तरह ही मैंने रैप किया हुआ है. तो उसकी वजह से एक बेसिक जो है वो रैप हुआ है. उसके बाद मैंने सिर्फ ये हिजाब ऐसे अपने ऊपर सर के ऊपर सेट किया इन अ वे कि आई ऑलरेडी हैव दिस ट्रायंगल. आई मेक श्योर कि मेरे हर हिजाब में ये ट्रायंगल हो ताकि मेरा मुंह गोल ना लगे. देन बोथ साइड्स है इक्वल, दोनों साइड्स इक्वल है फॉर दिस हिजाब. ऑल यू हैव टू डू इज़ थ्रो वन साइड ऑन योर शोल्डर and then the other side on your other shoulder and you are done. I don't even secure it over here, but you definitely can with your hijab pins, especially when you're wearing your under hijab. उससे क्या होता है, it doesn't move at all. So when you're secured it is good to go. It is airy. You can wear earrings with this. You can even loosen it up even more. So ये है मेरा number one most worn, most easiest hijab style with Georgette hijab. For the second hijab I'm using a different color. This is absolutely my favorite color nowadays. ये मैंने पहली दफ़ा जो है वो पहना है on camera. और we still have to make sure कि हमारा triangle in place हो. So for this look you need एक side छोटी and you need one side लंबी. ये जो है this is a little drapery वाला on one shoulder. So you're just going to make sure ऐसे है. You can even like pin to secure the triangle कि जब आप उसको throw करें अपने shoulder पे तो वो move ना करे, like the triangle doesn't move. So now you have secured the triangle. I'm gonna take the longer side and you are just going to like ये ऐसे है. You're gonna take the नीचे वाली side and just throw it on your shoulder. I'm wearing a collar तो थोड़ा सा irritate कर रहा है, but let me like adjust it. So this is our number 2 look. I really like this look, especially when it comes to Eastern wear. एक साइड से गिर रहा होता है, यहाँ से covers my shoulder, और एक साइड से जो है वो नहीं है. तो ये मुझे बड़ा पसंद है और मैं यूजली ये शलवार कमीज़ या लंबी कमीज़ के साथ पहनती हूँ. बहुत कम होता है कि मैं ये ईस्ट वेस्टर्न के साथ पहनूँ. सो दिस इज द number 2. This is how it looks from the back. This is going to be our third look, which is also pretty simple, and I use this when I go out wearing western clothes. You're gonna pin same like you did in the previous looks, making sure the triangle is in place.
इसके लिए भी आपको एक साइड शॉर्ट और एक साइड लॉन्ग चाहिए. So when you have your triangle in place, you're gonna keep the short side ऐसे ही. जो longer side है, you are going to rotate like ढीला, not so tight but like थोड़ा ढीला, and then you're going to throw it back like this. They're pretty simple but they look really nice. So this is our third look. I use these when I have to show my necklaces or just have to show my gala. अगर मैंने कोई like अच्छा कोई shirt top पहना हुआ है तो I usually like turn it like this. Otherwise वही मैं जो पहला वाला है वो ऐसे करके फेंक देती हूँ और I just like give it 2 turns and then back. Another thing you can do is, which is a fourth look, I'm going to show you with the same hijab color. What you have to do is you have to throw one side over like this, but this time हमने नीचे वाला नहीं, हमने ऊपर वाला ऐसे करके फेंका और फिर हमने दूसरी साइड जो नीचे वाली है उसको भी पीछे शोल्डर फेंक दिए. बट दिस टाइम द डिफरेंस बिटवीन द 2 हिजाब स्टाइल जो मैंने पहले शो किया था वो ये है कि इसके अंदर दोनों साइड्स ड्रेप हुई हैं, ऊपर नहीं है. बोथ आर लाइक falling on the shoulder. I like this too. It's pretty easy once you get a hold of the hijab and how to like make sure कि Georgette जो है वो set हो आपके सर पे, so you can like do anything with it. I like this too. So this is pretty much it. These were my 3 main favorite most used hijab looks with Georgette hijabs. So let me know if you like the video और इसी अगर आप भी Georgette hijabs लेते हो और आप भी इनमें से कोई एक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो do let me know in the comment section. I hope you like the video. I will inshallah be more active on YouTube. So subscribe to my channel and I will see you next time. Thank you. Allah Hafiz.